Hi, today we will start with indefinite integration, one of the most fearing topics for 12th standard students. ये टॉपिक हम एकदम आसान बनाएंगे and this topic is also connected to further topics like definite integration, differential equation. So ये टॉपिक को हम हो सके तो पूरा डेप्थ में सीखेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट ऊपर ऊपर से थोड़े सम्स करने से अच्छा I would advise you, if you want to become more better, then you can start writing along with me, and that will also help in the progress of yours in this topic. Starting with the basic derivative. So हम पढ़ रहे हैं indefinite integration, शुरू कर रहे हैं derivative से. Let us consider d by dx of x raised to 5 plus 3. We know derivative is nx raised to n minus 1, 5x raised to 4 plus 3's derivative is 0. Now this symbol is symbol of derivative. When this goes on the other side of equality sign, in our syllabus it is written as integration. So जैसे log उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाता है, वैसे ही जब डेरिवेटिव सिंबल इक्वालिटी के उस तरफ चला जाता है, इट इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बोल दो. वन मोर नेम फॉर दिस इज प्रिमिटिव. प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसे. नाउ लेट अस टेक दिस dx on this side. So it becomes integration of 5x raised to 4. यही चीज यहाँ वापस लिखी है. dx is read as with respect to x. With respect to x. So we read like this: integration of 5x raised to 4 with respect to x is equal to x raised to 5 plus 3, which was seen on the left side. ये जो बच गया था वो यहाँ लिखा हुआ है. इन सेम वे हमने फिर से वैसे ही एक एग्जांपल लिया है. x वाला टर्म वही रखा है x रेस टू 5, बट कांस्टेंट 3 के जगह 7 लिखा है. तो हम देख रहे हैं हमारा जो आंसर मतलब जो यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेस टू 4 dx, तो इसके जैसा ही दिख रहा है. whose answer is now looking like x raised to 5 plus 7, while earlier for the same question answer was plus 3. So now you know, instead of 3, 7, it can be even minus 3, minus 7, any fraction. It can be any irrational number. It can be any real number. This 3 or 7 is not finite. Hence, we replace this with some arbitrary constant c. So c को हमारे syllabus में बोला जाता है arbitrary constant. Arbitrary का मतलब है जो fix नहीं है. So अभी से 3 या 7 नहीं लिखेंगे, हमें कांस्टेंट c लिखेंगे. सो जो भी क्वेश्चन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का है जहां लोअर एंड अपर लिमिट्स नहीं है, वहां हमें पीछे कांस्टेंट c लिखना पड़ेगा. एक स्टैंडर्ड फॉर्म से सीख लेते हैं. सो इफ यू हैव d by dx ऑफ f of x raised to f of x प्लस c रखते हैं, रेस टू कुछ नहीं रखते हैं, is equal to, सपोज इसका आंसर है f of x, देन हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f of x, दैट इज कैपिटल F of x dx is equal to f of x plus c. See, this c can be any arbitrary constant. यही हमारे टॉपिक का शुरुआत होगा. हमने और एक चीज इस इनिशियल एग्जांपल से सीख ली कि जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला तो राइट में जो टर्म आया उसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारा लेफ्ट साइड में डेरिवेटेड टर्म का फंक्शन मिल गया. जैसे कि इफ समवन आस्क्स व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x plus c, we know it is equal to cos x, जिससे ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x is equal to sin x plus c. यानी अगर हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हमें आ जाएंगे. एक और देखते हैं एग्जांपल. से वी आस्क यू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x raised to n plus 1
अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो इसका डेरिवेटिव आएगा, वी विल नॉट डू u अपॉन v रूल बिकॉज डिनोमिनेटर में तो n प्लस वन कॉन्स्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस वन इज n प्लस वन x raised to n plus 1 minus 1 will be only n divided by existing n plus 1 and constant का तो derivative 0 है. We can cancel this one, we can even cancel this n plus 1. So we realize that integration of x raised to n, क्योंकि यहाँ अभी सिर्फ x raised to n बचा है, dx is equal to x raised to n plus 1 अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाता है तो ये इंटीग्रेशन तो अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन डाल देते हैं कि n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, नहीं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, वो हमें नहीं चाहिए। So this formula is true for any n, not only natural number, any rational irrational number except minus 1. Let us look at some standard integration formulas. यहाँ पे हमने थोड़े फॉर्मूले लिखे, ये सारे फॉर्मूले नहीं है चैप्टर के, ये इनिशियल बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए फॉर द टॉपिक। लेट अस लुक एट द फॉर्म्स। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिखे हुए हैं और यहाँ पे समझाया कि इंटीग्रेशन उसका कैसे हो रहा है। जैसे हमने यहाँ का अभी फर्स्ट फॉर्म नहीं देखा, अभी वी डिराइव्ड द फर्स्ट वन हियर, x raised to n's integration is x raised to n plus 1 upon n plus 1, n cannot be minus 1. We just above saw this also, integration of cos x is equal to sin x plus c. अब बाकी के लिए चाहिए तो डेरिवेटिव से समझ लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स विल बी cos x, माइनस को शिफ्ट करा देते हैं, हेंस साइन एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस cos x plus c. सेम वे tan x का डेरिवेटिव sec²x है, तो sec²x का इंटीग्रेशन इज tan x. cot x डेरिवेटिव इज माइनस cosec²x, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec²x शुड बी cot x. हमने माइनस राइट में रखा है, तो c को माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो भी चलता है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वी कैन राइट इट एज प्लस c. डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, so इंटीग्रेशन sec x tan x इज sec x plus c एंड सो ऑन. कोसेक एक्स का डेरिवेटिव अगर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होगा कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. अब ये जो पहला फॉर्म है, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूलेस बने हुए सिलेबस में, वो देख लेते हैं। वो बोलता है ना, आपने गाड़ी खरीदी तो अभी एक्सेसरीज ले रहे हो, तो यही फॉर्म के ऊपर नहीं तो 3 से 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमें रटे रहे तो बेटर है। जैसे कि ये एक्स्ट्रा डिराइव्ड फॉर्म्स है इसी के, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये बार बार आता है सिलेबस में, तो हमें मालूम है यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो x का डिग्री 1 है, मतलब n 1 है, तो दिस फॉर्मूला बिकम्स x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c. जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो इंटीग्रेशन सिंबल नहीं लिखना राइट साइड में, is equal to x raised to 2 upon 2 plus c. याद करो what was derivative of x, 1 था, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एक और देखते हैं इसी का। सपोज हमने सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन पूछा, तो 1 को सोचा जा सकता था एज x raised to 0। हमने बोला था n कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1, तो अब n हमारा 0 है कंपेयर विद दिस, सो दिस बिकम्स x रेज टू 0 प्लस 1, तो 1 होगा अपॉन 1 प्लस c, जिसका कंक्लूजन है आंसर इज x प्लस c। यानी 1 का इंटीग्रेशन हमें x प्लस c याद रखना है, x का डेरिवेटिव 1 था, 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस c। एक और देखते हैं जो बार बार सिलेबस में यूज होते हैं, उनको एटलीस्ट एक बार बता देते हैं। जैसे कि 1 अपॉन रूट एक्स, ये भी बार बार दिखता है हमें पोर्शन में। अब
बहुत सारे बच्चे गलत फहमी में है कि डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन अलग से ले लो। ऐसे नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर के टर्म को न्यूमरेटर में लेके आएंगे। देखो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिखे हमने सारे न्यूमरेटर में लिखे हैं ना, एक भी डिनोमिनेटर में नहीं है, ये एक भी डिनोमिनेटर में नहीं है। देखो सारे फॉर्मूले, जस्ट वन सेकंड, ये जो भी सर्कल कर रहे हैं, देयर इज नो फॉर्मूला इन डिनोमिनेटर। तो हमें क्या याद रखना है कि सब कुछ न्यूमरेटर में रखना है। तो x का डिग्री हाफ है, ऊपर जाके माइनस हाफ होगा, सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस हाफ dx। इंटीग्रेशन सिंबल अभी तक हटा नहीं है, हमने सिर्फ इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाई है, पावर को ऊपर रखा है। x रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 plus c. Minus half plus 1 is half. So this is x raised to half upon half plus c. अब ये डिनोमिनेटर का हाफ ऊपर ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा ये, एंड x रेज टू हाफ इज रूट एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी। यानी ये लर्न कर रहे हैं 1 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन इज 2 रूट एक्स प्लस सी। ये तीनों हमने इसी फॉर्म से जिस पे बॉक्स बना है उसी से डिराइव किया है। एक लास्ट देख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। ऐसे तो हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, बट ये 4-5 जो बार बार चाहिए वो याद करवा लेते हैं। कम ऑन, अगेन बाय दिस रूट एक्स लॉजिक, एक्स रेज टू 2 को पहले ऊपर जाना है, सो इट इज एक्स रेज टू माइनस 2 बनेगा, माइनस 2 लिखा है। एक्स रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन है एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये अपॉन लिख रहे माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये भी हो सके तो याद रख लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। याद नहीं रख पाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। एक हाथ कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं, सिर्फ फॉर्मूला से बोर हो जाता है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। अभी तक हमने सम शुरू नहीं की है, एक हाथ कोई सम भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स रखे, सी दिस वन, ये तो यहीं पे सॉल्व किया हुआ है। 1 अपॉन एक्स रेज टू 7 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो पहले एक्स रेज टू 7 ऊपर जाएगा, एक्स रेज टू माइनस 7 बनेगा, दैट इज व्हाट वी आर री राइटिंग, एंड देन x raised to minus 7 plus 1 upon minus 7 plus 1 is minus 1 upon 6x raised to 6. No need to by heart this simplified answer. As we discussed कि तो हजारों बना सकते हैं, हमने तो खाली ऊपर के 4 आपको बोले, हो सके तो याद रखो। फोर्थ रूट x लिखा है, तो x रेज टू 1/4 होगा, तो n 1/4 है, एंड देन वही लॉजिक x रेज टू 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1। सिंप्लीफाई करोगे तो 5/4 डिनोमिनेटर में आएगा, जिसका रेसिप्रोकल हो जाता है 4/5, एंड दिस पावर बिकम्स 5/4 प्लस c। इफ यू हैव 3 cosec square x, 3 बाहर चला जाएगा, cosec square x is standard integration whose by hearted answer is minus cot x, hence minus 3 cot x plus c. Let's take one or two simple numerical examples. जैसे कि ये, तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है न्यूमरेटर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो पहले इसको ठीक से लिखते हैं। हर बार एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन होना जरूरी नहीं है, याद रखना कि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है हमारे लिए सिंप्लीफाइंग, जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है वो हमें सीखना है। तो रूट एक्स का स्क्वायर, वी आर डूइंग ए स्क्वायर विच विल बिकम स्ट्रेट अवे एक्स, या पहले ऐसे लिखते हैं एक्स रेज टू हाफ प्लस एक्स रेज टू 2/3 होल स्क्वायर करा देते हैं अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। नाउ वी कैन एक्सपांड बाय a plus b whole square formula, which is going to become a square, so simply x हो जाएगा, plus 2ab 2x raised to half into x raised to 2/3
प्लस x रेज टू 2/3 का स्क्वायर विल बी 4/3 अपॉन x is equal to integration. We'll try to add the powers of half and 2/3. Half plus 2/3, you can do the rough work here. Half plus 2/3, half plus 2/3 is simply 3 plus 4, 7 upon 6. So this is becoming equal to x plus 2x raised to 7 upon 6, 7 upon 6 plus x raised to 4/3 dx upon x. Now we can separate this. There are 3 terms in numerator. हर एक को upon x करवाते हैं, तो x upon x हमारा 1 हो जाता है, प्लस 2 टाइम्स x रेज टू 7 upon 6 माइनस 1, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 था तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट 1 हो गया, प्लस x रेज टू 4/3 minus 1 dx. So now there is no denominator. एक लास्ट स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो दिस इज 1 प्लस 2x रेज टू 1 upon 6 प्लस x रेज टू 1 upon 3 dx. देखो अभी एक सिंप्लीफाई हो गया, सब कुछ न्यूमरेटर में है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर. 1 का इंटीग्रेशन हमने अभी देखा x था, प्लस 2 टाइम्स x रेज टू 2 उधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई भी होगा, x रेज टू 1/6 प्लस 1, इफ यू ऑल एग्री इट इज 7 upon 6 अपॉन 7 upon 6 प्लस x रेज टू 1/3 प्लस 1 इज x रेज टू 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3. सो यहाँ हमारा एक लास्ट स्टेप बन सकता है, इज इक्वल टू x प्लस 2 6 12 अपॉन 7 x रेज टू 7 upon 6 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर का 4/3, न्यूमरेटर में 3/4 होता है, x रेज टू 4/3. सो ऐसे क्वेश्चंस हमें जमने चाहिए. हमने पहले a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड किया, मतलब देखो कैसे एलिमेंट्री फॉर्म 8th 9th में जो हम करते थे एक्सपांशन वो सिखाया, फिर सेपरेट आउट कराया. तो आपने देखा इंटीग्रेशन जब एंड में अप्लाई कर रहे हैं वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल है हमें स्ट्राइक होना कि हमें सिंप्लीफाई करना है और उसको स्प्लिट करने जमना चाहिए, सारे टर्म्स न्यूमरेटर में आ जाने चाहिए. एक और छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. अभी तक हमने सम शुरू नहीं किए, ऐसे समझ लो बस एक थोड़ा सा वार्म अप सेशन हो रहा है टू गेट इनटू द टॉपिक. एक और करते हैं. अभी हमने क्या सीखा कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए. सो ये डिनोमिनेटर को पहले ऊपर लेके जा रहा है, इंटीग्रेशन सिंबल लिखा जाएगा, इट इज 3 माइनस 8x रेज टू -5 dx. Now this is looking like x raised to n. देखो ये पूरा टर्म को x मान सकते हैं, ये पूरे को x मानेंगे. ये x क्यों मान पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट में जहाँ सर्कल किया वो लीनियर टर्म है, यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ अगर डिग्री 2 होगी तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता है. फिलहाल जो क्वेश्चन है वही एड्रेस करता है, इज दिस अ लीनियर टर्म विच इज सर्कल्ड. यस, लीनियर यानी डिग्री 1 है x की, यस, एंड बाहर का जो पावर है उसको हम n मानेंगे. सो इट इज लुकिंग लाइक x रेज टू n फॉर्म whose integration is x raised to n plus 1. So we write 3 minus 8x raised to -5 plus 1 is -4 divided by -4. यहाँ तक तो हमारे लिए नया नहीं है, नया अब आ रहा है अपॉन coefficient of x. So what is coefficient of x in the question? -8. तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में -8 लिखना है, जो ऑलरेडी -4 है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखेंगे. ये हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, इनटू d by dx of 3 minus 8x करते थे, तो -8 मल्टीप्लाई हो जाता था.
इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, तो जो वहां मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी, खत्म हो गया इंटीग्रेशन। इसको चाहिए तो थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं एज 1/32 टाइम्स 3 माइनस 8x रेस टू -4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये हमारे सम का आंसर है। एमसीक्यू में भी आ सकता है ऐसे इजी लेवल क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नाउ बिफोर वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज रिवाइज करने जरूरी है। जब तक वो हमारे स्ट्रांग नहीं है, ये टॉपिक होना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो लेट्स सी ये टॉपिक में हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसको चेंज कर देते हैं। So see here we have prepared a list of formulas which we want you to be aware before you start with the topic. ये 9-10 से फॉर्मूले हमने लिखे हैं, देखते जाते एक एक करके। फर्स्ट वन इज sin²x प्लस cos²x इज इक्वल टू 1, ये तो हर बच्चे को याद है। सेकेंड फॉर्मूला इज 1 प्लस tan²x इक्वल टू sec²x, भी हमने पढ़ा है। एंड 1 प्लस cot²x इक्वल टू cosec²x, ये तीनों हमने 10th स्टैंडर्ड में देख लिया है। अब 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आ रहा है, sin²x इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 माइनस cos²x। इंटीग्रेशन में ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, क्योंकि इंटीग्रेशन पावर में दिक्कत प्रोड्यूस करता है व्हेन यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ओनली फॉर sec²x एंड cosec²x हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अवेलेबल था, बट फॉर sin²x एंड cos²x वी tan²x sec²x हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है। तो sin²x के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद ली, पावरलेस फॉर्मूला बनाया। देखो पावर अभी 1 हो गया, यानी कि हम पावरलेस बोल रहे हैं। हमें डिग्री 2 प्रॉब्लम देता है इंटीग्रेशन में, हमें लर्न करना है sin²x इज हाफ 1 माइनस cos²x। सिमिलरली cos²x इज लाइक दिस ओनली, हाफ, बस खाली ये माइनस के जगह यहाँ पे प्लस आ रहा है, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। cos²x is half 1 plus cos²x. This sin² cos²x, this is no need to memorize, you already know it. सोचो sin²x ही लिखा है, 2 इधर है, तो आप जानते हैं 2 sin² cos² is sin²x only. sin² cos² is half sin² plus y plus sin² minus y, ये भी आप जानते हैं, आपने 11th में ऐसे लर्न किया है कि अगर 2 इधर है तो 2 sin² cos² is sin² plus y plus sin² minus y। ये फॉर्मूले को हम डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते थे। तो 7th फिर 8th देख लो, cos² sin y सिमिलर टू 7th ओनली इज हाफ sin² plus y माइनस sin² minus y, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस है। 9th and 10th are again similar, cos² cos y is half cos² plus y plus cos² minus y, हाफ कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड 10th में sin² sin y, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 10th वन, हाफ cos² minus y माइनस cos² plus y, यानी यहाँ पे पहला माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, बाकी सब में आप देखोगे तो पहले ब्रैकेट में ही एडिशन ऑफ एंगल्स था x plus y। नाउ 11th फॉर्मूला तो यही है जो हमने 4th में पढ़ा है। तो बस खाली 2 को यहाँ रखा और उसको अलग फैशन में लिखा हुआ है हाफ एंगल में, यानी और ये फॉर्मूला तो ज़्यादा इजी है। 4th आपने कम देखा है फॉर्म में, बट 11th तो बहुत बार देखा है। 1 माइनस cos² इज 2 sin²x बाई 2, या हाफ x लिख सकते हो। सिमिलरली 1 प्लस cos² इज 2 cos²x बाई 2, या हाफ x। 13th वन sin³x, ये एक बार देख लेते हैं ये कैसे लिखा होगा। 13th फॉर्मूला, you have been aware that sin3x is equal to 3 sin x minus 4 sin³x. So 4 sin³ is equal to 3 sin x माइनस sin3x। अब ये 4 को यहाँ डिवाइड करा देता है, तो sin³ becomes equal to 1/4 3 sin x माइनस sin3x।
क्यूब नहीं लिखा है, sin3x लिखा है, इसको ठीक से लिखते हैं sin3x। सी वही हमने 13 फॉर्म में लिखा है, sin³ x इज 1/4 3 sin x माइनस sin3x। सी अगेन इट्स अ पावरलेस फॉर्म, यहाँ पे पावर 1 हो गया जबकि क्वेश्चन में पावर 3 था। तो इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को x रेज टू n से सॉल्व करने नहीं देता है। इसका आंसर आप sin रेज टू 4 x अपॉन 4 नहीं लिख सकते हो, तो वो एल्जेब्राइक फॉर्म के लिए है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है। We have to convert it into powerless form like this. And 14th is similar, 1/4। बस आप याद रख सकते हो कि माइनस के जगह प्लस लिखा है एंड 3 cos x प्लस cos3x। अगर क्वेश्चन cos³ x है तो cos में आंसर आएगा, sin³x था तो sin में आएगा। साइन के वक्त मिडल साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस है। These forms का आइडिया आपको होना ही चाहिए। We will now let us continue। एंड जो फॉर्मूले अभी हमने देखे ऊपर, उसी के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन, इंटीग्रेट cos x। यहाँ लिखा नहीं है बट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वन, cos²x। इफ यू हैव सीन द वीडियो बिफोर, जो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, वी आस्क्ड यू कि ये x रेज टू n से कंपेयर नहीं करना है। तो cos²x का फॉर्मूला जो हमने बाय हार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, वो है 1/2 1 प्लस cos²x dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट विल गो आउटसाइड। दोनों टर्म्स के बीच में 1 एंड cos²x के बीच में प्लस साइन है, एंड इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड ओवर एडिशन। सो 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस cos का इंटीग्रेशन है साइन, एंगल वही रहेगा 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द क्वेश्चन इज 2, तो उसी से डिवाइड करना है। जैसे डेरिवेटिव में इनटू 2 करते थे, यहाँ पे अपॉन 2 होगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई हाफ आल्सो इफ यू वांट टू, सो इट विल बिकम हाफ x प्लस sin 2x प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ऐसे भी लिख सकते हैं या हाफ कॉमन रख के छोड़ सकते थे। एक और लेते हैं, देखो साइन की डिग्री 2 है, तो साइन स्क्वायर और एंगल हमने mx रखा हुआ है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाफ वैसे ही रहेगा, यहां बन जाएगा 1 माइनस cos 2mx। अर्लियर क्वेश्चन में x था तो 2x हुआ, mx है तो 2mx हुआ, बस साइन स्क्वायर था तो यहाँ माइनस है फॉर्मूला में, dx इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 1's इंटीग्रेशन इज x, ये 1 का इंटीग्रेशन x लिख रहे हैं। नाउ डू नॉट कॉपी द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x कर दिया, माइनस cos 2mx का आएगा sin 2mx divided by coefficient of x is 2m, so right here upon 2m plus c। हाफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लाइक प्रीवियस वन। थर्ड वन, वी हैव cos³x। तो cos³x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फिर से वो ऊपर जो फॉर्मूले बताया उसका पावरलेस फॉर्म देखना पड़ेगा। विथ राइटिंग प्रैक्टिस वो याद हो जाएगा आपको। 1/4 3 cos x plus cos3x dx। Now the integration is 1/4 like 1/2 previously will stay out। 3 cos x का इंटीग्रेशन है 3 times sin x। Do not do upon 3, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है
तो आइडियली अपॉन 1 लिखना चाहिए, अपॉन 1 का फर्क नहीं पड़ रहा है इसके लिए लिखा नहीं है, प्लस cos3x इंटीग्रेशन इज sin3x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। एक और लेते हैं, फोर्थ वन, इट इज sin⁴x। अब ऐसा नहीं है कि भाई पावर बढ़ाते ही जाएंगे, ऐसे जितने हमारे सिलेबस में है उतने हमें जमने चाहिए टू सिंप्लीफाई। एक और कर लेते हैं, sin⁴x। sin⁴x can be written as sin²x the whole square. Now sin²x का trigonometric formula is 1/2 1 minus cos²x, don't forget, whole square dx. 1/2 will become 1/4. Let's write it here. इंटीग्रेशन तो रहेगा अभी भी, 1/4 1 minus 2 cos²x plus cos²2x. नाउ दीज 3 टर्म्स में हमें पावर वाला फॉर्म खाली ये थर्ड टर्म है cos²2x, ये दोनों तो अच्छे दिख रहे हैं बिकॉज पावर नहीं है। तो cos²2x को जैसे sin²mx कराया, आप सोचो cos²2x को क्या लिखेंगे, 1/4 1 minus 2 cos²x plus 1/2 times 1 plus cos²x, बट x के जगह 2x है क्वेश्चन में, तो 2 times 2x becomes 4x, एंगल डबल हो जाता है, dx is equal to इंटीग्रेशन 1/4 1 minus 2 cos²x हाफ इंटू 1, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा देते हैं, हाफ इंटू 1 तो हाफ ही है, और ये कांस्टेंट हाफ और ये 1 एडेबल है तो 3/2 हो जाएगा बाद में, प्लस हाफ cos4x, cos लिखा है 4x dx, ये cos लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एक और स्टेप जस्ट टू मेक ऑल अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस हाफ इज 3/2 माइनस 2 cos²x प्लस 1/2 cos4x dx। वी आर रेडी टू इंटीग्रेट, क्योंकि अब पावर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है हमें, 1/4 बाहर आ जाएगा, टाइम्स जैसे 1 का इंटीग्रेशन x है, 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x है, क्योंकि 3/2 बाहर जाएगा तो 1 बचता, 1 का इंटीग्रेशन x है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट इनटू x याद रखो, बट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 सिखा है, माइनस 2 sin²x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस हाफ cos4x का इंटीग्रेशन है sin4x अपॉन 4 प्लस c, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस c, we can do cancellation of 2, here you are able to see 2 cancelling, बाकी तो ठीक लग रहा, we can write down the last step is equal to, चाहिए तो 1/4 मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं, last step will be is equal to 3/8x 4 2s minus sin²x अपॉन 4 मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 4 इज 32, sin4x अपॉन 32
plus arbitrary constant c. अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. Let's take up the first question. Integration of sin²x cos²x. You know the problem in this problem is the degree 2. So we can write this as 1 minus cos²x upon 2 into 1 plus cos²x upon 2. That is one way. Or you can multiply divide by 4 and observe this becoming 2 sin x cos x whole square. You know 2 square is 4, that's why we have written a 4 in the division. Let 1 by 4 stay out as it's a constant. 2 sin x cos x becomes sin 2x the whole square. Can be written like this also, sin square 2x. You know 2 sin x cos x is sin 2x with a degree outside 2 is written here. Now sin²x formula is half into 1 minus cos 2x. So this will become half into 1 minus cos 2 times this angle. 2 times 2x is 4x dx is equal to, we are ready to integrate, 4 2s are 8, so 1 upon 8. 1's integration is x minus cos integration is sine 4x upon coefficient of x is 4 plus arbitrary constant c. चलो वैसे ही एक और करते हैं. You all think in that time क्या कर सकते हैं? First step we can do is, if we are asked to integrate this, like in the previous sum, to write 2 sin x cos x the whole cube, 2 का cube 8 होता है, so we can write this as equal to 1 upon 8 times integration 2 sin x cos x the whole cube. You know 2 cube means 8 only, hence 1 by 8 is multiplied outside. This becomes 1 upon 8 integration sin 2x the whole cube. The whole cube can be written like this here 3. Just a while back we saw the formula. sin²x formula is 1 upon 4 3 sin x. So 3 sin x के जगह पे एंगल 2x है, so write 2x minus sin 3x, so 3 into 2x dx. In case it was difficult for us to understand this step, we can recollect. sin³ formula learned by us is 1 upon 4 3 sin x minus sin 3x. So in place of x, we have a 2x here. So in the formula, wherever you see x, we are mentioning 2x. Let's continue. Is equal to 1 upon 32 integration of 3 sin 2x now can be done directly as minus 3 cos 2x upon coefficient of x is 2. This has become 6x angle for us, 3 into 2x. So sin 6x integration is minus cos 6x. With earlier minus it becomes plus, therefore
cos²x upon 6 coefficient of x plus arbitrary constant c. This is the answer. You can multiply by 32 inside and multiply it in denominator. That is up to us. Let's take one more. Say we take up a question, 1 mark MCQ type. Integration of 1 upon sin²x cos²x. This 1 can be written as sin²x plus cos²x. So we can write this as equal to sin²x plus cos²x divided by sin²x cos²x dx. Let's split it. So we get sin²x divided by sin²x cos²x. So we can imagine this cancellation of sin²x with sin²x. So we'll be left with 1 upon cos²x and 1 upon cos²x plus cos²x upon sin²x cos²x में cos²x will cancel out. So we will be left with 1 upon sin²x. This can be written by us here. So it is 1 upon sin²x dx. Just putting up a square bracket here. 1 upon cos²x का integration is sec²x plus cosec²x, reciprocal of sin²x. These are the only two forms where degree, in spite of it being 2, its integration is known to us. Sec²x integration is tan x. Cosec² integration is minus cot x plus arbitrary constant c. Important step was naming or writing one as sin²x plus cos²x. Let's take one more. Now here in the denominator we have a binomial. So we cannot split like in the previous sum. Therefore, we can insert sums where you have 1 plus sin x or 1 minus sin x or 1 plus cos x or 1 minus cos x. We can think about conjugate. So we write integration sin x upon 1 plus sin x. Let's multiply and divide by 1 minus sin x upon 1 minus sin x. This is called conjugating the denominator or rationalizing, is equal to integration of this sin x into 1 becomes sin x. We are multiplying sin x, this sin x with this both terms, minus sin²x, sin x into sin x, upon a plus b, a minus b is a² minus b². So it is 1 square minus sin²x. We are multiplying a plus b with a minus b. 1 minus sin²x is cos²x. This term is cos²x, this entire denominator. So, and then it becomes a monomial. Monomial means a single term. And then you can take opportunity to split. So sin x upon cos²x minus sin²x upon cos²x dx. Reciprocal of cos x is sec x, and sin x upon remaining cos x will become tan x. So the first term becomes sec x tan x, and this is nice because it's a standard form to you.
minus tan square x. We don't have tan square x direct formula in syllabus, but from 10th standard we know its identity. So we continue writing one more time sec x tan x integration, and then tan square x is written as sec square x minus 1. Many make a mistake of writing 1 minus sec square x. It is sec square x minus 1 dx. Now all terms have come in standard form. Let us integrate. So integration of sec x tan x is sec x minus sec square x integration is tan x. Minus into minus is plus. 1's integration is x plus a common arbitrary constant c for all the three integrals is your answer. Let us take one more. We have integral of sine raised to 8x minus cos raised to 8x upon 1 minus 2 sine square x cos square x. We can factorize the numerator as sine raised to 4x the whole square minus cos raised to 4x the whole square, which becomes let's write sine first, sine raised to 4x plus cos raised to 4x into sine raised to 4x minus cos raised to 4x dx divided by this 1 in similar way as they are in sine and cos. We can write 1 as sine square x plus cos square x, and let us intentionally keep a whole square, because then 2ab term that will come will be able to cancel the further minus 2ab term, which is minus 2 sine square x cos square x, which is minus 2 sine square x cos square x, like this, is equal to, the numerator can be further written as, in the factorized form, sine raised to 4x plus cos raised to 4x is copied, but this is sine square whole square minus cos square whole square, which becomes sine square x plus cos square x into sine square x minus cos square x dx upon the expansion of this, a plus b whole square will give you sine raised to 4x plus cos raised to 4x plus 2 sine square x cos square x minus 2 sine square x cos square x, the last term, like this. Let's cancel out 2ab kind of term. We are also able to observe sine raised to 4x plus cos raised to 4x will cancel with the numerator term. In the meanwhile, sine square x plus cos square x here is 1, so this is equal to 1. Let's write equal to 1 here. So the leftover is only sine square x minus cos square x, whose formula is minus cos 2x. So this becomes equal to integration of minus cos 2x dx, which is equal to minus sine 2x upon coefficient of x is 2 plus arbitrary constant c. So this was a little difficult one, slightly. We have one more coming up. Again, slides continue this way. Let's see how it goes.
The next question, we have integration of cos 5x plus cos 4x. Now here, this is a slightly different one as said before. This angle is 3x, and if you get sine 3x here, then it becomes 2 cos 3x sine 3x will become sine 6x. So we intentionally multiply by sine 3x. Here we write cos 5x plus cos 4x, which is 2 cos c plus d by 2. So 5x plus 4x is 9x upon 2 into cos c minus d by 2. 5x minus x is 4x is x by 2. We are doing factorization formula upon sine 3x multiplying with 1 minus 2 cos 3x is 2 sine 3x cos 3x is equal to, let's see, is equal to, we are continuing from here. So this becomes integral 2 sine 3x by 2 cos 3x upon 2 into 2 cos 9x upon 2 cos x by 2 dx divided by sine 3x, this is sine 3x minus sine 6x. We are writing only the denominator for our understanding. Now sine 3x minus sine 6x is again factorizable by writing this as 2 cos c plus d by 2, 3x plus 6x is 9x upon 2 into sine 3x minus 6x upon 2 is minus 3x upon 2. Let's see if we can cancel out any factor. We can cos 9x by 2 we can cancel. We can even cancel the constant 2 here. Sine of minus theta is minus sine theta. So this can be further written as equal to, is equal to 2 times, or let us write sine 3x by 2 here, because we know it's going to cancel with the denominator, and remaining is 2 cos 3x upon 2 into cos x upon 2 dx and upon minus sine 3x upon minus sine 3x upon 2. So we get a cancellation here. Sine 3x upon 2 getting cancelled. We are left with 2 cos a cos b factorization, which is equal to 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b. So this becomes a minus of cos a plus b, 3x by 2 plus x by 2 is 2x, plus cos a minus b is 3x by 2 minus x by 2 is x dx. And this gives us the last step, minus of integration of cos 2x is sine 2x upon 2 plus sine x plus c. I know here there was some space constraint. Last time we can quickly revise. We multiplied and divided by sine 3x. The reason for doing this was cos 3x will help us to get sine 6x here. That was the intent. Then we did factorization formula for cos c plus cos t here. And then sine 3x can be written in half angle formula as 2 sine 3x by 2 cos 3x by 2. We did cancellation. Sine of minus theta is minus sine theta. So sine 3x by 2 gets cancelled. Now 2
cos A cos B defactorization formula is cos A plus B. So adding of these two angles give you 2x and subtracting of these two angles give you x. That's what we have done here. And then cos integration is simply sine. Let's take some more. Say the question is integration of tan inverse sec x plus tan x dx, this is dx, is equal to tan inverse of, over addition you cannot do integrations distributive property, so we will write this as 1 upon cos x plus sin x upon cos x. So this is 1 plus sin x, and both have in denominator cos x, and why not we write it as upon cos x like this. Now 1 plus sin x formula is there. Alternatively, we can even do this way. Many authors textbooks also write like this. Let's learn this way. We can write 1 plus sin x as 1 minus cos, and let's go in second quadrant by writing pi by 2 plus x. So cos pi by 2 plus x is, just for our understanding, cos pi by 2 plus x means minus sin x, because complementary angle cos will change to sine in second quadrant, so where sine is positive but question has cos, so answer will be taken negative. This negative into this negative will become positive. That's what the question was, plus sin x. So this is true. And upon, we can write the denominator as this is cos x, so this will become for us sine pi by 2 plus x, and sine pi by 2 plus x means cos x only. We can remove this part. The reason for writing this is that 1 minus cos formula we have is 2 sine square x by 2, which is more easy than 1 plus sine x formula. So this becomes integration tan inverse of 1 minus cos formula is 2 sine square theta by 2. So we write this as 2 sine square theta by 2. So when you divide pi by 2, it becomes pi by 4. And when you divide x by 2, it becomes x by 2. And sine theta can be written as 2 sine theta by 2 cos theta by 2. So 2 sine pi by 4 plus x by 2 into cos pi by 4 plus x by 2. See, we have a chance to cancel out 2. We can even cancel sines one factor. So the leftover in the bracket is the same angle, and sine upon cos is tan. So it becomes integration of tan inverse of tan pi by 4 plus x by 2. And this tan inverse of tan is the angle itself. So this gives us is equal to integration of pi by 4 plus x by 2 is equal to, constants integration is into x, so k's integration is kx, pi by 4 integration is pi by 4x, but pi by 4's derivative was 0, and x by 2's integration is plus, it's x raised to 1, so n plus 1 upon n plus 1 is x raised to 2 upon 2, 2 2's are already 2 is there, 4 plus c. So answer is pi x upon 4 plus x square by 4 plus c. Now if the same question was asked in derivative, still we could have done this, and we would have then been left with derivative of this. Pi by 4's derivative is 0 and x by 2's derivative would be 1 by 2. Then answer of derivative of this question
this question's derivative would have been 1 by 2. Let's take a defactorization formula question. This should be mostly very easy for you. This time, let's write down the formula. We have sine A cos B formula as equal to, we have discussed in the formula sheet, half sine A plus B plus sine A minus B. See, we are able to separate the product into addition of two trigonometric terms. See, there is an addition in between. That's called defactorization. So multiplication पे integration operate नहीं कर रहा है. आगे चल के है एक u into v rule, integration by parts जिसको बोलते हैं, बट दोनों फंक्शन सेम होने के वजह से वो भी वहाँ काम नहीं करेगा. दोनों फंक्शन अलग अलग होने चाहिए, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक लोगैरिथमिक, एक्सेट्रा. So to begin with integration of this, let's apply this defactorization formula. So integration of half times sine A plus B is sine 2x plus 3x plus sine 2x minus 3x 2x minus 3x dx. So this is equal to integration of half times sine phi x plus sine of minus x. But sine of minus x is minus sine x. So let's take minus outside and then एक साथ integration कर लेते हैं. Integration half times, we have sine phi x minus sine x. Integration of sine is minus cos, so answer is half times minus cos phi x upon coefficient of x is phi minus sine x integration is plus cos x bracket closed plus c. So this is the answer for defactorization, a 2-mark question, quite important. So you are seeing integration is not difficult. It's a formula that needs to be practiced. So far it has been that way. Let's take up one more. A similar a question like before, but this time 3 functions are getting multiplied. There is no point in writing sine 2x as 2 sine x cos x, because then sine 3x also, if written in formula form, 3 sine x minus 4 sine cube x, will become quite complicated, and we don't know what expansion, what degree it will come. It can become further very complicated. So continuing with the earlier strategy that we just saw, let's think that the question is only this much. So if you multiply divide by 2 like the previous one, or if you are aware, sine A sine B formula is equal to half times cos A minus B minus cos A plus B. Let's try applying this formula here. So is equal to integration of half times sine x plus 2x, x minus 2x. This is minus 2x, not sine, it's cos. So one more time, cos x minus 2x minus cos x plus 2x times sine 3x dx is equal to, half can be pulled out or taken out, cos of minus x will remain,
minus cos 3x multiplying with sin 3x dx. Cos of minus theta is cos theta is equal to half times, let's simply write cos x sin 3x. We are using distributive property, multiplying sin 3x inside, minus sin 3x cos 3x dx. So we know this is like cos A sin B. We have a formula for cos A sin B also. Cos A sin B's defactorization is half times sin A plus B minus sin A minus B. Let's apply it here, is equal to half times integration of half times. We are applying cos A sin B formula here. Half times sin x plus 3x minus sin x minus 3x sin x minus 3x brackets closed minus, instead of formula we can learn this way, half times 2 sin 3x cos 3x dx. So this is multiplying with the outer half. Let's see, is equal to half times, or this half and this half common can become 1 by 4 integral sine 4x minus sine of minus 2x minus, this half has already gone outside and become 4 in that 1 by 4. So 2 sine 3x cos 3x is simply sine 6x dx. Let's take this minus sign outside. Sine of minus theta is minus sine theta. So 1 by 4 sine 4x plus sine 2x minus sine 6x minus sine 6x dx. We now take integration. Integration of sine is minus cos, so it is minus cos 4x upon 4 minus cos 2x upon 2 plus cos 6x upon 6. Sine's integration is minus cos. Minus of minus is plus. Yeah, minus. So plus c. We can multiply this 1 by 4 inside and end the sum. Or we can take even 2 common from the bracket, whatever is. So we write minus cos 4x upon 16 minus cos 2x upon 8 plus cos 6x upon 4 6 are 24, 4 6 are 24 plus arbitrary constant c. This was a little longer, but a very good practice for defactorization formula.